Hey guys, subscribe to our channel and press the bell icon so that you won't miss any update from us. Now let's get started. Hey guys, what is up? This is Vivek from Gears today, and today I'll tell you how to use your Redmi Note 5 Pro as a DSLR. Basically, you can get best out of this camera by using these two applications. Probably this is backend camera application and the other one is footage camera. Basically, the most important work that I'm doing right now is I'm using footage camera application to show you how to use this on a very semi-pro manner, because footage camera doesn't allow you to change your shutters or etc. It'll give you adjustment to your exposure and ISO. So, and I think you can get the best out of your camera too. So what you have to do is just download these two applications from the link that is given in the description below, and don't forget to follow me on Twitter or Instagram so that you won't miss my updates. This is the application that I'm showing you. Inside it, and there is a photography camera, video camera, and you can actually get the more from these settings. स्टेबलाइजेशंस तुम इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, जो कि तुमको इस थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन के अंदर पहले से ही मिलता है. एनिमेटेड GIFs ले सकते हैं. नाउ आई एम इन द पार्क, सो आई विल टेस्ट आउट दी Redmi Note 5 Pro's camera as a DSLR, like how to get the best images, best macro shots, how the focus is working. Right now I'm using Beacon camera application to adjust my focus, and I'll show you how to adjust your focus. This is 40, 47, 60, 75, and the focus is nearly done. I don't need to change the ISO or etc thing, no white balance, so I'm just showing you how to take this shot. You can check the shots in the end of the video. I'll add all shots in the end of the video just to give you a basic introduction. And talking about these shots, it worked pretty nice, and Beacon camera is the best application that will give you the best manual modes on your smartphone on the Redmi Note 5 Pro. So basically, if you want to use your Redmi Note 5 Pro as a DSLR, Beacon camera is the application. If you know more into it, that I can change the exposures, I can change the shutter speeds, etc, then you should install the Beacon camera and start enjoying the camera too. For me, when I was trying this application, there was some issues with the shutter speed. I think that was Oreo, stability of applications. एंड नाउ गाइज, अगर मैं इस एप्लीकेशन की बात करूं तो एक्सपोजर के हिसाब से ये एप्लीकेशन काफ़ी हद तक हमको एक मैनुअल एक्सपीरियंस देती है इस फ़ोन के अंदर. एंड जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार मुझे बस एक फ़ोटो खींचना है बट दिस फोटो शुड कम गुड, तो थोड़ा सा सेटिंग्स तुमको चेक करनी पड़ेंगी पहले, और उसके बाद तुम खींच पाओगे. मैंने 2-3 मैक्रो शॉट्स भी लिए हैं, लास्ट में आपको दिखाऊंगा. नॉर्मली जो मैंने यूज़ किया इस फ़ोन को इस एप्लीकेशन के साथ, शॉट्स काफ़ी डिसेंट आए. डे लाइट में तो शॉट्स अच्छे ही हैं, बट नाइट लाइट के लिए आई वोंट रिकमेंड कि तुम इसको DSLR टाइप यूज़ कर पाओगे. एंड जो मी का एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन अभी थोड़ी देर बाद मी का डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में सैम्पल्स लूँगा, जिससे आइडिया लगेगा कि डिफ़ॉल्ट मी ने तुमको क्या दिया है और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कितना चेंज दे देती है. सो इस एप्लीकेशन की वजह से आई टुक बेटर मैक्रो शॉट्स, बेटर इन्फिनाइट फोकस शॉट्स एंड अ गुड शटर स्पीड वाले शॉट्स, जो कि मुझे एनहेंसमेंट्स उस एप्लीकेशन में नहीं मिलते हैं जो डिफ़ॉल्ट मी की है. एंड नाउ गाइज, यू कैन चेक द सेटिंग्स ऑफ द डिफ़ॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज there is a EIS stabilization, and the bad thing about this is there is no 4K, and you can take your shots in 4:3, 18:9 ratios. So that is, I think, add on to your thing. Talking about this default camera application, HDR को अगर तुम enable करके use करते हो तो हाई डायनेमिक रेंज वाले फोटोज अच्छे आते हैं. तुम्हें पीछे जो स्काई है उसका काफी एक हद तक एक्सपीरियंस हो जाता है. पोर्ट्रेट फोटोज का इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा. पोर्ट्रेट फोटोज तब के लिए अच्छे हैं जब 2 मीटर तक कोई खड़ा है, या फिर 2 मीटर तक ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट और तुम फोटो लो. ब्लर काफी अच्छा कर देता है, हालांकि एजेस से थोड़े इश्यूज आते हैं, बट इफ यू आर स्टेडी देन यू विल गेट द बेस्ट शॉट्स. HDR मोड इनेबल कर दिया है, एंड HDR मोड इनेबल करने के बाद तुम ये देख सकते हो बाय डिफॉल्ट भी हमको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं चेक करने के लिए इस एप्लीकेशन के अंदर. आई से अबाउट दिस इज माई एक्सपीरियंस वॉज गुड विद द एप्लीकेशन. एंड ये कुछ शॉट्स हैं जो मैक्रो शॉट्स में इसके साथ ट्राई कर रहा था, बट इतने खास हुए नहीं, तो मैंने एप्लीकेशन चेंज कर दिया. एंड आई टुक दीज सेम शॉट्स फ्रॉम Beacon कैमरा, एंड नाउ सी फोकस एडजस्ट करने के बाद मैं कितने अच्छे से इसको कैप्चर कर पा रहा हूँ. एंड ये शॉट
बहुत प्यारा लगा था मेरे को। एंड सेकंड शॉट ये शॉट था जो कि ग्रास में मैं लेने की कोशिश कर रहा था। इस फोन के थ्रू एंड इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा हद तक मुझे फ़ायदा हुआ फोटो खींचने का। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट एप्लीकेशन फॉर योर फोन टू यूज इट एज अ DSLR कैमरा। सो ये कुछ बेसिक टिप्स थे जिनके थ्रू आप चेक कर सकते हो, आप फोटोज देख सकते हो, इन्फानाइट फोकसेस ले सकते हो, शटर स्पीड चेंज कर सकते हो, एक्सपोजर चेंज कर सकते हो। एंड Redmi Note 5 Pro का कैमरा पहले से ही काफी अच्छा है, तो I'll just say ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। तुम अच्छे से फोटोज वगैरह लो एंड अगर हो सके तो मुझे ट्वीट करो अपने फोटोज, इंस्टाग्राम पे टैग करो विवेक आर्टिस्ट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर पिक्चर्स विद मी so that we'll feature them on Gears Today in next videos in comparison or etc. Till then, take care guys and thank you so much for being here. I'll see you in my next one.